फ्रेमवर्क। तो एमबीओ एनालिसिस में एक डिसएडवांटेज था, इट ओनली कंसिडर्स सिंगल पीरियड फ्रेमवर्क. It only considers what? Single period framework. Okay, that was the one disadvantage of MBO analysis. वो disadvantage को overcome करने के हमारे पास क्या है? Monte Carlo simulation है. Single period framework के disadvantage को overcome करने के हमारे पास क्या है? Monte Carlo simulation है. In a single period framework, incorporation of taxes is relatively easy. Rebalancing is not required. In a single period framework, what happens is incorporation of taxes easy होता है, rebalancing required नहीं होता है. But using Monte Carlo simulation, हम interim cash flows भी incorporate कर सकते हैं. बीच में जो बॉन्ड से जैसे बीच में हमको इंटरेस्ट मिलता है, कूपन पेमेंट मिलता है, Monte Carlo simulation में हम वो भी incorporate कर सकते हैं. Monte Carlo simulation में हम वो भी incorporate कर सकते हैं. We can incorporate that as well. Okay, because of Monte Carlo simulation, we are able to incorporate the intermediate cash flows from an asset. And Monte Carlo simulation आपको एक single point outcome नहीं देता है. It always gives you a range of possibilities कि आपका portfolio का value क्या हो सकता है, ये range में आने के chances क्या है. Okay, so it is always helpful in visualizing better using Monte Carlo simulation rather than a single outcome. खाली आपको ये बोल दिया कि आपके portfolio returns 20% आएगा, खाली आपको ये बोल दिया कि आपके portfolio returns कितना आएगा, 20% आएगा. That's not good. 20% आने के chances कितने हैं, 0% आने के chances कितने हैं, 16 to 25 के बीच में आने के chances कितने हैं. Monte Carlo simulation helps you in determining that. Monte Carlo simulation helps you in determining that. It gives you a range of possible outcomes rather than one single outcome. Write it down, everyone, please, quickly. So single period framework में क्या होता है? What happens in a single period framework? Taxes को incorporate करना easy होता है. एक ही पीरियड का टैक्सेस है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, डीटीए डीटीएल नहीं होगा, उसमें रीबैलेंसिंग का रिक्वायर्ड नहीं होता है. बट दैट्स द डिसएडवांटेज ऑफ मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजर. That's the reason we use Monte Carlo simulation, because here we can consider multiple inflows and multiple outflows. Write down, everyone, please, quickly. Okay, moving forward now. Asset class liquidity and mean variance optimizer. Due to liquidity issues, there are various assets, various alternative investments like real estate, PE funds, okay, private equity fund, infrastructure fund, real estate investments. ये सब में liquidity क्या होता है? बहुत कम होता है. तो इसके लिए इनके expected return में क्या आना चाहिए? liquidity premium आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये assets को MBO analysis में incorporate करना बहुत difficult होता है, because इनका data availability कम है. So reasons why they are difficult to add, or reasons why it is difficult to incorporate these asset classes in the traditional MBO analysis. Reason क्या है? First reason, इनके indexes available नहीं है. PE funds के, infrastructure fund के, real estate के, इनके indexes available नहीं है, data ही कम available है इनका. अगर index होगा भी, उनमें हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते. जैसे निफ्टी 50 में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेंसेक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर रियल एस्टेट का इंडेक्स है भी, इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वेस्टेबल. तो तीसरा पॉइंट, इसमें हर एक PE फंड, हर एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्या है? दे आर हेटेरोजेनस, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम, एवरीथिंग इज डिफरेंट. तो हर एक एसेट्स विद इन रियल एस्टेट भी क्या होगा? डिफरेंट होगा. तो हर एक का रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे? For these reasons, इनको ट्रेडिशनल MBO एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट करना क्या है? डिफिकल्ट है. एवरीवन प्लीज राइट डाउन क्विकली, इंपॉर्टेंट है अगेन ये भी. Now, how to address the above issues of illiquidity? पहला तरीका, बेस्ट तरीका, उसको MBO एनालिसिस से एक्सक्लूड कर दो, MBO एनालिसिस में से निकाल दो, कंसीडर करो ही मत. बट टारगेट एसेट एलोकेशन में कंसीडर कर लो उसको. तो फाइनल एसेट एलोकेशन में कंसीडर करो, बट MBO एनालिसिस में उसको कंसीडर मत करो.
Second tarika to address this issue is include these illiquid asset classes in MBO. लेकिन कौन से वाले assets जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, स्पेसिफिक एसेट, आपका जो रियल एस्टेट है, आपके पास जो प्रॉपर्टी है, उसको हमारे पोर्टफोलियो में, आपके पास जो पीई फंड है, उसको हमारे एमबीओ एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट कर लो, उसके रिटर्न्स एंड रिस्क को एस्टिमेट करके हमारे एमबीओ एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट कर लो, बट ओनली द वन व्हिच यू आर लुकिंग एट स्पेसिफिकली. थर्ड तरीका, उस स्पेसिफिक एसेट क्लास को इंक्लूड मत करो अगर आपके पास उसका डेटा अवेलेबल नहीं है तो, बट उसके एक ब्रॉड एसेट क्लास को इंक्लूड कर लो, उसका इंडेक्स को इंक्लूड कर लो, उसके इंडेक्स को इंक्लूड कर लो, इंक्लूड द इंडेक्स ऑफ दैट एसेट. जैसे आपके पास गोरेगांव में घर है, तो गोरेगांव के घर का अगर आपको रिटर्न और रिस्क कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिल रहा है, तो आप गोरेगांव के एक इंडेक्स को इंक्लूड कर लोगे, बट वो इंडेक्स का प्रॉब्लम क्या होगा, इट विल नॉट बी अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय प्रॉपर्टी, बिकॉज इंडेक्स में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे. इंडेक्स में क्या होंगे, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे, एंड रियल एस्टेट में एवरी प्रॉपर्टी इज यूनिक, हेट्रोजेनस. आ रहा है समझ में? Am I clear with this? So these are the लिक्विड एसिड को हटा ही दो. अगर इलिक्विड एसिड नहीं हटाना तो जो तुम्हारा पर्टिकुलर लिक्विड एसिड है उसका स्पेसिफिक रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करो इनपुट में एमबीओ एज इनपुट फॉर द एमबीओ. और अगर इफ नॉट देन इंक्लूड द लिक्विड एसिड का include the liquid in the MBO by using the index, broad class index. ways of incorporating illiquidity issues in your MBO analysis. After this section, we will have a section on risk budgeting approach. Okay, we'll have a section on risk budgeting approach, and then we'll take a look at liability relative asset allocation. Okay, the remaining part of this chapter is also very easy, not at all difficult. Tomorrow we should be able to complete this.
Okay, so in this section of principles of asset allocation, we will be taking a look at risk budgeting approach. We will see how to compute MCTR, that is marginal contribution to total risk. We will see how to compute ACTR, that is absolute contribution to total risk. And then we will see describe liability relative approaches, that is liability relative asset allocation. Then we will discuss different types of liabilities, surplus optimization, two portfolio approach, integrated asset liability approach. So that's what is the focus of this particular section now. Okay, let's move forward now. Okay, so now let's try to understand what is the goal of risk budgeting. What's the goal of risk budgeting? The primary goal of risk budgeting is to maximize returns per unit of risk. What is the primary goal of risk budgeting? Maximize returns per unit of risk. Okay. अभी रिस्क को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं. टोटल पोर्टफोलियो रिस्क, एक्टिव रिस्क, रेसिडुअल रिस्क. That's a secondary story. Important point is, how do I maximize returns per unit of risk? That's what I'm supposed to do. I'm supposed to maximize what? Returns per unit of risk. MCTR. What is MCTR? Marginal contribution to portfolio risk. It is a change in the portfolio risk or a small change in the allocation to specific asset class. इसका मतलब क्या है? जब हम कोई asset class में weightage change करेंगे, तब हम कोई asset class में weightage change करेंगे. When we change the weightage in a particular asset class, तो मेरे portfolio का risk कितना change होगा? मेरे portfolio का risk कितना change होगा? That's what is MCTR. Change in portfolio risk for a change in asset class weight. Change in portfolio risk for a change in asset class weight. Now, what is ACTR? What is ACTR? Contribution of asset class to total portfolio risk. एक asset class ने पूरे portfolio में कितना risk contribute किया है in absolute terms is known as ACTR. What is it known as? ACTR. Okay. Now, what are the advantages of taking MCTR into consideration? What are the advantages of taking MCTR into consideration? To see the impact on portfolio risk due to change in weights. Okay, MCTR consider करने से हम लोग क्या देख सकते हैं कि portfolio में एक asset class का weight change किया तो portfolio का risk कितने से change होगा.
to identify optimal asset allocation and to develop a risk budget. So these are the three primary applications or uses of MCTR. To see the impact on portfolio risk due to change in weights, portfolio का risk कैसे change होता है अगर weights change करेंगे तो, then to identify optimal asset allocation and then to develop the overall risk for the budget, the overall budget for the risk. Write down everyone these three important points. Next, now let's see some of the important or relevant calculations that we need to study. Let's take a look at it now. Now, some basic formulas here. MCTR, how to calculate marginal contribution to total risk. Beta of the asset class with respect to the portfolio. So, जिस asset class का, suppose stocks का, मैं marginal contribution to total risk ढूंढ रहा हूँ. So, stocks का beta with respect to the portfolio, multiply it with total portfolio risk. Multiply it with what? Total portfolio risk. Beta gives you how sensitive is your asset with the overall portfolio. So मेरे stock का, मेरे asset class का beta multiplied with the portfolio risk, that will give you MCTR. ACTR का formula क्या है? मेरे asset class का weightage into MCTR. मेरे asset class का weightage into MCTR. And then how much percentage of risk is contributed by my position? ACTR divided by total portfolio risk. These are the three formulas. I haven't seen sums on these formulas, but these are three important formulas that we need to be aware about. We should be knowing about these three formulas. So MCTR is MCTR of shares is equal to beta of shares multiplied by portfolio risk. ACTR, absolute contribution to total risk, is equal to asset का weights, so shares, into MCTR. weight of shares multiplied by MCTR of shares. And the third one is percentage contribution of shares is ACTR of shares divided by risk of the portfolio. Write down these three formulas, everyone, please. Moving forward now. How do we decide optimal asset allocation? When will optimal asset allocation happen? From risk budgeting perspective. Okay. When will optimal asset allocation happen from risk budgeting perspective? अब सुनो ध्यान से. मुझे है ना कोई भी एसेट क्लास का वेटेज मेरे पोर्टफोलियो में कब बढ़ाऊंगा मैं? जब वो रिटर्न्स बढ़ाएगा. लेकिन रिटर्न्स बढ़ाऊंगा तो उसका रिस्क भी बढ़ेगा पोर्टफोलियो का. समझ में आ रहा है? I need to keep on adding or keep on increasing the weight of an asset class. जब तक वो पोर्टफोलियो का रिटर्न्स बढ़ा रहा है, बट एट द सेम टाइम रिस्क भी तो बढ़ेगा. तो मुझे क्या देखना है? रिटर्न ऑफ एसेट डिवाइड बाय एक्सेस रिटर्न ऑफ द एसेट. एक्सेस रिटर्न फ्रॉम द एसेट डिवाइड बाय MCTR. जब तक एक एसेट में ये नंबर बहुत हाई है, जब तक सपोज शेयर्स के बारे में बात करता हूं मैं, सपोज शेयर्स का ये रेशियो हाई आता है, मैं क्या करते जाऊंगा? पोर्टफोलियो में शेयर्स का वेटेज बढ़ाते जाऊंगा. पोर्टफोलियो में शेयर्स का वेटेज बढ़ाते जाऊंगा तो पोर्टफोलियो में शेयर्स का MCTR भी क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा. So slowly and slowly this ratio will keep coming down till the time this ratio is greater. I will keep on adding more weights in shares. I'll keep on allocating more amount to shares. कब मैं शेयर्स में और allocate करना स्टॉप कर दूंगा? जब ये बाकी से क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा. बेसिक पॉइंट क्या है? जब तक आपका ये रेशियो हाई है, you will keep on increasing the weight of that particular asset class.
till the time when all assets have this ratio to be similar. So whenever ratio of excess returns to MCTR is equal for asset classes and also equal to the portfolio Sharpe ratio, till that time I'll keep on adding or I'll keep on increasing the weight of the asset in the portfolio. जैसे ही हर एक asset class के लिए same हो जाएगा, the moment this becomes equal for each and every asset class, I will stop increasing the weight of that asset class in the portfolio. Because जब तक ये कोई asset class में ये ratio ज़्यादा है, मतलब वो asset class ही add करना चाहिए portfolio में, because it is giving you better returns, it is giving you better risk-adjusted returns. The moment this ratio becomes equal for everyone, at that point there is no incremental benefit from adding any particular asset. फिर वो point पे जो allocation होगा वो हमारा optimal asset allocation होगा. I hope I am clear with this. तो जब तक ये ratio, जब तक excess returns per unit of risk, जब तक excess returns per unit of risk ज़्यादा है, जब तक excess returns per unit of risk क्या है, ज़्यादा है, तब तक मैं वो asset class में weightage बढ़ाते जाऊंगा. तभी तक मैं वो asset class में weightage क्या करूंगा, बढ़ाते जाऊंगा. सबको आ रहा है समझ में? The moment this ratio becomes equal to for other asset class as well, there is no incremental benefit of increasing the weight or increasing the allocation to this particular asset class. So this ratio, excess returns per unit of MCTR, should be equal. At that point, optimal asset allocation happens. I hope I'm clear with this. Everyone please write it down. It's a very, very important point. Optimal risk allocation example. This data has been provided to you, but let's try to understand how this table was constructed. Let's try and understand how this table was constructed. How do we find ACTR? ACTR का formula क्या है? Or let's say MCTR का formula क्या है, to be more precise? Beta of the asset into total risk of the portfolio. First, US equities का formula कितना है? 1.3. Multiply it with total risk of the portfolio, which is 12. That's your MCTR, which is 15.6%. ये तो हो गया US equities के लिए. So that's how we compute. 8.6. 8.78 कैसे आया? 8.78 कैसे आया? Again, beta 0.732 multiplied by 12. 0 multiplied by 12. That's how you get MCTR. Once you get MCTR, how do we compute ACTR? ACTR is MCTR into weight स्टॉक ए का या फिर इक्विटीज का MCTR कितना है? 15.6 into 60%. That's how you get ACTR का number, which is 9.36%. How much? 9.36%. Similarly, you can find the remainings as well. Now, how do we get percentage contribution to total risk? ये number कैसे आया? Percentage contribution to total risk कैसे आया वो number? ACTR, that is 9.36 divided by total risk. 9.36 divided by total risk. That's how we compute that number. We get the answer as 78.03%. And then excess returns to MCTR. Okay, कैसे निकालेंगे excess returns to MCTR? Excess returns 6.5 दिया हुआ है हमको excess returns divided by MCTR कितना है इसका? 15.6. Asset allocation. That's your portfolio's what? Optimal asset allocation. Everyone note it down please quickly. Asset allocation. Now we take a look at asset allocation. Assets को allocate करने के दो approaches है. One is known as asset-based approach and the other one is known as factor-based approach.
asset based approach and what? Factor based approach. Asset based approach में क्या होता है? We try to diversify our risks. We try to diversify away our risks on the basis of allocation to different asset classes. So you define the opportunities in terms of different asset classes. Okay, अब बोलते हो debt investment करना चाहिए, equity invest करना चाहिए. The investment opportunities are defined in terms of what? Asset classes. But in factor-based approach, the opportunities are defined in terms of risk factors. The opportunities are defined in terms of what? Risk factors. मुझे market risk कितना चाहिए, मुझे illiquidity risk कितना ही चाहिए. So in factor-based approach, it defines the opportunities in terms of risk factors like market exposure, size, valuation, momentum, liquidity, etc. So these are two different ways of allocating assets. Asset-based approach, wherein you define investments in terms of or opportunities in terms of different asset classes. आप बोलोगे REITs में ये साल अच्छा returns आएगा. आप बोलोगे ये साल I would like to invest in US large cap stocks. To define opportunities in terms of asset classes. And factor-based approach, to define opportunities in terms of factors like market exposure, size, valuation, momentum, liquidity, etc. Note down please everyone quickly, important slide here. Okay, moving forward now. Now, what is a factor-based approach? What is a factor-based approach? Factor-based approach में we define the opportunities in terms of risk factors. So factors are $0 investment portfolios. What are factors? $0 investment portfolios. You will go long on factor which is going to perform better. Obviously, जिस factor पे आपको लग रहा है कि better perform करेगा वो factor, you will go long on that factor, and you will go short on the factor in which you are expecting that factor will underperform. So you will short the underperforming attribute. Factor-based approach का best example is Pharma French model. We have been doing this since level 1. What is the Pharma French model? Wherein we consider 3 different factors. Size factor. हम लोग क्या बोलते हैं? We should go long on small cap stocks because वो outperform करेगा. And we should go short on large cap stocks because वो market को underperform करेंगे. That is one factor known as size factor. Then you have value growth factor, where when you go long on value stock and short on growth stocks. And then there is market portfolio. Okay, then there is market portfolio. So basically, अगर आपने साइज पे बेट किया है, मार्केट पोर्टफोलियो पे बेट किया है, वैल्यू पे बेट किया है, या ग्रोथ पे बेट किया है, जिस पे भी आपको बेट करना है, आप ये 6 या 5 फैक्टर्स पे बेट कर सकते हो. लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप, वैल्यू वर्सेस ग्रोथ एंड मार्केट पोर्टफोलियो. This is nothing but factor based approach. What is this? This is factor based approach. जहां पर आप इंडस्ट्री पे बेट नहीं प्लेस कर रहे हो, आप किस पे बेट प्लेस कर रहे हो? फैक्टर्स पे बेट प्लेस कर रहे हो. जनरली हम लोग क्या होता है, हम लोग ना इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ आई वांट एन एक्सपोजर टू लार्ज कैप स्टॉक्स इतना, स्मॉल कैप स्टॉक्स इतना. We describe the investment universe that way. But in factor-based approach, we describe the universe investment opportunities in a different way, based on factors. अभी factor-based approach के advantages क्या है? What are the advantages of factor-based asset allocation approach? First thing, factors आपस में correlated नहीं होते हैं. Liquidity and momentum factor, size factor, ये लोग में आपस में correlation नहीं होता है. So you get diversification benefit. You can use mean variance optimizer the way we did it for asset based asset allocation. यहाँ पर भी हम लोग mean variance optimization use कर सकते हैं. Best part क्या है? In general, results are same using factor based approach or using asset based approach. ज़्यादा फर्क नहीं आता है. Which approach to select? अभी आप लोग बोलोगे सर ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, तो 2 अलग-अलग मेथड तो बता दिए. Generally अब कौन सा मेथड यूज करोगे, कौन सा मेथड सिलेक्ट करोगे? The approach which you can visualize and understand easily. अगर आपको इंडस्ट्री ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, you are more comfortable with betting on the industry, you will select asset based asset approach. लेकिन if you can visualize risk in a better way, if you can visualize risk in different factors, then that is a better approach. But ऐसा नहीं है कि one method is superior over another. ऐसा भी नहीं कि दोनों के रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है. I hope I'm clear with this. Note it down everyone please. Next. Okay. Liability characteristics.
relevant to asset allocation. First important characteristic that we need to understand here is fixed versus contingent. What is a fixed liability? What is a contingent liability? अब ये fixed rate corporate bond है. Let's say you have a fixed rate corporate bond. आपको मालूम है फ्यूचर में आपको कितना भरना पड़ेगा. आपकी लाइबिलिटी फिक्स्ड है. आपकी लाइबिलिटीज क्या है? फिक्स्ड है. But there are certain liabilities which are not fixed. They are contingent in nature. They are what? Contingent in nature. What is an example for that? Contingent liability का defined benefit pension plan या फिर life insurance. कब देना है आपको नहीं पता है. It is dependent on certain event. कितना देना है वो भी काफी बार dependent होता है event के basis पे. They are called as what? Contingent liability. Next, legal versus quasi-legal liabilities. जो आपकी अग्रीमेंट में डिफाइंड है कि आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा. They are called as legal liabilities, which are described or defined in a legal agreement. Am I clear with this? What are quasi-legal liabilities? Quasi-legal liabilities मतलब वो आपका लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है. वो आपका लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको इतना देना ही पड़ेगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. बट वो लाइबिलिटी की वजह से आपको फ्यूचर में कैश आउटफ्लो होगा. इट इज समथिंग व्हिच कैन रिजल्ट इन फ्यूचर कैश आउटफ्लो. बेस्ट एग्जांपल किसका दिया है इन लोगों ने बुक में? यूनिवर्सिटी एंडोमेंट फंड. उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? क्वासी लीगल. अगर वो लोग देंगे तो यूनिवर्सिटी का सक्सेस, यूनिवर्सिटी का ग्रोथ उसके ऊपर डिपेंड करेगा. बट उनको देना भी जरूरी नहीं है. इट्स अ क्वासी लीगल लाइबिलिटी. दे आर नॉट लीगली बाउंड टू गिव एन एक्स अमाउंट. समझ में आ रहा है? सो इट्स कॉल्ड एज क्वासी लीगल लाइबिलिटी. Duration and convexity, everyone knows what it is. Everyone knows what is a duration, what is a convexity. Duration मतलब percentage change in portfolio value, percentage change in bond value for 1% change in YTM, for 1% change in YTM. And convexity is second order derivative. Duration is first order derivative. Everyone knows that. And we are going to cover this in detail in fixed income as well. Liability value versus साइज ऑफ द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन. अभी एक बड़े कंपनी में अगर मुकेश अंबानी के पास 100 करोड़ का लोन है, 100 करोड़ स्टैंड अलोन बेसिस पे क्या लगता है? बहुत बड़ा लोन है. 100 करोड़ स्टैंड अलोन बेसिस पे क्या लगता है? इट्स अ सिग्निफिकेंटली बिगर लोन. बट अगर हम लोग बोलेंगे वो लोन मुकेश अंबानी का है तो हम क्या बोलेंगे? बहुत छोटा सा लोन है यार. तो खाली लाइबिलिटी का अमाउंट देखना इंपॉर्टेंट नहीं है. रिलेटिव टर्म्स में देखना इंपॉर्टेंट है कि कितने साइज का लाइबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स दैट अफेक्ट फ्यूचर कैश फ्लोज. फ्यूचर कैश इनफ्लो कितना होगा, आउटफ्लो कितना होगा, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. इंटरेस्ट रेट्स पे, इन्फ्लेशन पे, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. सो फ्यूचर कैश फ्लोज भी आपके लाइबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. टाइमिंग कंसिडरेशन, उसमें आएगा लॉन्जेविटी रिस्क. एवरीवन नोज व्हाट इज लॉन्जेविटी रिस्क. एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम जिंदा रहना, एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम जिंदा रहना, दैट इज कॉल्ड एज longevity risk. And then towards the end we have one more characteristic of liability that is called as regulation. Mainly ये insurance industry के applicable है. Last point regulation वाला, it is mainly applicable for insurance industry. I hope I'm clear up to this point. These points are important. Everyone please take a look at it quickly. इस सभी के सभी points important है. Everyone read this from your book once quickly. Now let's take a look at one of the most important sections, I would say. Approaches to liability relative asset allocation. Approaches to what? Liability relative asset allocation. There are three approaches that we're going to discuss here. There are three approaches that we're going to discuss here. The first one being surplus optimization. In that, what is surplus optimization? This is an extension of MBO in which we determine an efficient frontier based on the surplus with its volatility as our measure of risk stated in either in money or percentage terms. यहां पर हम लोग किसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? सरप्लस, एनीथिंग ओवर एंड अबव द लायबिलिटी, एनी एसेट ओवर एंड अबव द लायबिलिटी. तो यहां पर हम लोग हमारे सरप्लस के रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज और वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एफिशिएंट फ्रंटियर बेस्ड ऑन द सरप्लस. बेस्ड ऑन व्हाट? सरप्लस. जैसे पेंशन प्लान में एसेट्स माइनस लायबिलिटी. समझ में आ रहा है?
दैट इज योर सरप्लस। इंश्योरेंस कंपनी के पास काफी बार सरप्लस होता है। सो तुम्हारे लाइबिलिटी में से एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है, यहां पर तुम उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो। सेकेंड वन, टू पोर्टफोलियो अप्रोच। हम दो पोर्टफोलियो बनाएंगे। दो पोर्टफोलियो का नाम क्या होगा? हेज्ड पोर्टफोलियो एंड रिटर्न सीकिंग पोर्टफोलियो। एक पोर्टफोलियो जो लाइबिलिटी मीट करने की कोशिश करेगा, एक पोर्टफोलियो जो किसको मीट करने की कोशिश करेगा? लाइबिलिटी को मीट करने की कोशिश करेगा, और दूसरा पोर्टफोलियो रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करेगा। What does the second portfolio do? It will try to generate returns. They are called as hedged portfolio, hedging portfolio, and return seeking portfolio. Integrated asset liability approach में हम लोग दोनों को साथ में कंसिडर करके ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। We will consider both assets and liability, and we'll try to optimize both assets and liability together. We'll integrate assets and liability, and then we'll try to optimize the result. So this approach integrates both the assets and the liabilities in a joint optimization method. This approach does what? This approach integrates both the assets and the liabilities in a joint optimization method. Everyone read this once again, please. सिंपल है एकदम। पहले केस में हम लोग एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करने के बाद जो बचता है उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। टू पोर्टफोलियो अप्रोच में हम दो पोर्टफोलियो बनाते हैं। पहले पोर्टफोलियो का नाम है हेज्ड पोर्टफोलियो, जो मेरे लाइबिलिटी को मीट करेगा। दूसरा पोर्टफोलियो होगा रिटर्न सीकिंग पोर्टफोलियो, जो मेरे रिटर्न्स जनरेट करेगा। तीसरा मेथड इंटीग्रेटेड एसेट लाइबिलिटी अप्रोच, हम दोनों को साथ में इंटीग्रेट करके ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। Consulting. Next, first one is surplus optimization. Surplus optimization. Here we are trying to maximize the returns of the surplus. Surplus return is change in asset value minus change in liability value divided by initial asset value. Surplus मतलब assets minus liability. Surplus मतलब क्या है? Assets minus liability. यहाँ पर हमारा एंड गोल क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ सरप्लस रिटर्न्स। सेम इक्वेशन लिखा है वापस से, कुछ नहीं है यहाँ पर, इतना ही है। rather than maximizing the utility of a particular asset, rather than maximizing the utility of a particular portfolio, यहाँ पर मेरा end goal है to maximize the utility of my surplus. So expected surplus return and expected variance of the surplus. Simple point क्या है? You will run or you will do a MBO analysis on the surplus. You will try to optimize the surplus. Perform MBO process on surplus returns and risk. Include the expected returns and variances of the liabilities. Okay, the correlations reflect the extent to which the assets are useful to hedge the liabilities. Now, what is an important point here? Ways to estimate the expected returns and variances of the liabilities. Liability inputs can be estimated using the expected return and volatility of corporate bonds. हमारे कंपनी का जो लाइबिलिटी है उसके रिटर्न्स और रिस्क डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? हमारी कंपनी का जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। Use a factor approach and identify the common factors that affect both the asset classes and the liability. Very important. Now, the next one is two portfolio approach. What's there in two portfolio approach?
अरे उसको बार बार धोने डाल रही है, बार बार इसको समेट के रख दे रही है। Hi guys, soft. अगर मेरे को थोड़ा तो now it feels.
परफॉर्म कर जाता है, क्या बोलते हैं इसको, 1/n रूल, राइट? एवरीवन प्लीज, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट रीबैलेंसिंग? व्हाई रीबैलेंसिंग इज नीडेड? सबसे पहला सवाल, रीबैलेंसिंग क्यों चाहिए? आपका पोर्टफोलियो आपके स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन से अगर ड्रिफ्ट हो जाता है, डिविएट हो जाता है, तो आपको वापस से उसको SAA की तरफ लाना पड़ेगा। इसके लिए रीबैलेंसिंग इज नीडेड। सो इट इज रिस्पॉन्स टू चेंजिंग क्लाइंट गोल्स, चेंजिंग मार्केट एक्सपेक्टेशंस, चेंजेस इन टैक्टिकल एलोकेशन। ये तीनों रीजंस की वजह से मुझे क्या करना पड़ता है, मेरे पोर्टफोलियो में एलोकेशंस रीबैलेंस करने पड़ते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में एलोकेशंस क्या करने पड़ते हैं, मुझे रीबैलेंस करने पड़ते हैं। एडजस्टिंग एसेट एलोकेशंस टू मूव टुवर्ड्स द originally defined SAA. So that is called as rebalancing. जो मैंने originally define किया था उसकी तरफ move होते हैं अगर हम लोग, उसको बोलते हैं rebalancing. Factors that impact the optimal corridor width, ये हमने पहले भी किया हुआ है, और the rebalancing range, मेरे corridor width को कौन influence करता है? Transaction cost and risk tolerance, correlation with the rest of the portfolio,
volatility of the rest of the portfolio. तो ये 4 फैक्टर्स है, ये 4 फैक्टर्स है जो मेरे रीबैलेंसिंग रेंज को, ऑप्टिमल कॉरिडोर विड्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऑप्टिमल कॉरिडोर विड्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। हायर द इन्वेस्टर्स रिस्क टॉलरेंस, अगर इन्वेस्टर का रिस्क टॉलरेंस बहुत हाई है तो वो अपने पोर्टफोलियो को डिविएट होने देगा। ही विल सेट द कॉरिडोर विड्थ टू बी वाइडर, वो अपने पोर्टफोलियो को ड्रिफ्ट होने देगा, डिविएट होने देगा। He will set the corridor width to be wider because the investor is less concerned about deviations from the optimal allocation. The higher the correlation of the asset class with the rest of the portfolio, अगर आपके asset class का correlation with the rest of the portfolio अगर high है, the corridor width would be wider or narrower. Simple है, अगर दोनों asset class same direction में move होते हैं तो दोनों का वेटेज भी क्या होगा, साथ में ही फ्लक्चुएट होगा। अगर एक का वेटेज बढ़ेगा दूसरे का भी बढ़ेगा तो दोनों का वेटेज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। दोनों का वेटेज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो मेरा पोर्टफोलियो ज्यादा डिविएट होगा ही नहीं, तो मैं कॉरिडोर विड्थ क्या रखूंगा, वाइडर रखूंगा। आई विल सेट द कॉरिडोर विड्थ टू बी वाइडर बिकॉज आई एम नॉट सपोज्ड टू बी वरीड बिकॉज दे विल मूव इन सेम डायरेक्शन। व्हाई वुड आई डू रीबैलेंसिंग? उनका कोरिलेशन क्या है, स्ट्रांग है, दे विल मूव इन सेम डायरेक्शन। आई विल सेट द कॉरिडोर विड्थ टू बी वाइडर। The higher the volatility of the asset classes, अगर मेरा एसेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगा, अगर मेरा एसेट क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगा, तो मेरा पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन से डिविएट कर जाएगा। तो वो केस में मैं मेरा कॉरिडोर विड्थ क्या सेट करूंगा, नैरो सेट करूंगा, बिकॉज वो डिविएट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर कॉरिडोर विड्थ नैरो सेट किया तो मुझे फ्रीक्वेंटली रीबैलेंस करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंटली रीबैलेंस करूंगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। दे कैन पुट एन आर्गुमेंट फ्रॉम दैट साइड एज वेल। तो वो हमको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके डिसीजन लेना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली द चॉइस ऑफ कॉरिडोर विड्थ डिपेंड्स ऑन द ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क कंट्रोल, तुमको कितना रिस्क अलाउ करना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड कोरिलेशन बिटवीन क्लासेस। इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस quantified cost benefit analysis would be required. In complex situations, a quantified cost benefit analysis would be required. This slide is very, very important. Would request everyone to please note it down quickly. Any doubts, any queries, ask me right now.